learned that former Chief Minister and Leader of Opposition of Himachal Pradesh, Mr. Jairam Thakur, has said that the Congress does not have the majority in the House. Well, in fact, he's only gone to reiterate his claim. He's, remember, also earlier accused the Congress party of evading the division of votes. He said that this is only being done to hide the fact that Congress party has at the moment lost its majority. Let's also listen into what Jairam Thakur is saying. भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा के अंदर जो विधायकों की संख्या का अगर हम नंबर की बात करें तो 25 है, लेकिन 25 से हमारा आंकड़ा बढ़कर के 34 हो गया जब राज्यसभा का वोट हुआ और उसमें हम जीते हैं। उसके बाद स्वाभाविक रूप से सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट हो गया। बजट सत्र चल रहा था और बजट सत्र के दौरान अलग अलग जो फाइनेंशियल बिल जो है हमारे, जिस पर वोटिंग होती है और हर बार होती है, उससे बचने का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। और पहले तो हमने जब कट मोशन पर हमने जब वॉइस वोट के साथ साथ में वहां पर डिवीजन मांगा, उसको अलाउ नहीं किया गया, उनके पास नंबर था नहीं। और उसके बाद परिस्थिति ये हुई कि इनके सामने संकट ये हो गया कि बजट पास अगर नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। इसके लिए एक ही तरीका था उनके पास कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का नंबर हम कैसे कम कर सकें। 15 विधायक आज, जिसमें मैं भी शामिल हूं, को सस्पेंड किया गया और विदाउट एनी रीजन। जो रूल्स हैं उसके परिधि में कोई इस तरह का विषय आता ही नहीं है उसमें, क्योंकि हम सस्पेंड तब होते हैं जब हम सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं, संचालन में बाधा डालते हैं। हम सारे विषयों को लेकर के सदन के अंदर अपनी बात कहने के लिए तैयार, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा सस्पेंशन किया गया ताकि कांग्रेस की सरकार बचाई जा सके। हमारा सस्पेंशन होने के बाद उनको बजट पास करने की गुंजाइश निकल आई और हमारी सस्पेंशन के बाद बजट उनने पास किया। और मुझे हैरानी इस बात को लेकर के है कि 68 विधायकों की विधानसभा 100 से ज़्यादा मार्शल विधानसभा के अंदर हमको उठाने के लिए, सदन से बाहर करने के लिए वहाँ पर बुलाए गए और वो हमको उठाने लगे, खींचने लगे। जब हमने कहा कि सदन के अंदर हम बैठे रहेंगे, और उसमें भी अल्टीमेटली 1 घंटे, सवा घंटे से ज़्यादा समय जो विधानसभा का जो एडजॉर्नमेंट किया गया था 12 बजे तक, वो जाकर के 1:15 बजे तक भी जारी रहा। सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई वहां पर। और विधानसभा के अध्यक्ष महोदय अपने आप को बड़ा कानूनविद मानते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहने नहीं चाहता हूं, क्योंकि आसन के प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन जिस तरह से उनने नियमों की विधानसभा के अंदर धज्जियां उड़ाई, आज तक के इतिहास में विधानसभा के किसी अध्यक्ष ने इस सीमा को नहीं लांघा जो वर्तमान में किया गया। उसके अलावा और आगे बढ़ करके अब उनको लगा कि अभी भी कसर रह गई। 6 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार को, जो हमारा कैंडिडेट था, उनको अपना समर्थन दिया, उनका वोट दिया, उनको नोटिस भेजा है। और नोटिस के माध्यम से सिर्फ सस्पेंशन नहीं, कुछ और नहीं, सिर्फ उनका जो है वो उनकी सदस्यता को समाप्त करने की दिशा में आज मुझे लगता है कि बहुत जल्दी फैसला करने वाले हैं। इससे साफ जाहिर होता कि कांग्रेस के पास विधानसभा के अंदर संख्या बल नहीं रहा है। और वैसे भी जब 43 विधायकों की स्ट्रेंथ वो अपने पास बतलाते रहे। All right, for more details, let's quickly go across to Arun Danta, who's on the phone line with me. Arun, place these accusations into perspective for us. What will this mean in terms of numbers, especially when Jairam Thakur is saying that the Congress does not have the majority? How will the BJP be able to prove that with 15 of its own MLAs now suspended? Well, see, Akanksha, what happened today
that budget was to be passed by the government, and therefore they realized that there could be trouble as BJP wanted this division of votes, and we have already discussed how that division of votes happened, which could actually expose what BJP thinks to the Congress. And therefore, then what happened, what Jairam Thakur is saying, that therefore when they realized this would go other way around, then they suspended 15 of BJP MLAs, including leader of opposition Jairam Thakur. And then when they were not present in the House, and Congress had the numbers, they passed the budget. And after passing the budget, they suspended the assembly, they adjourned the assembly rather, for indefinite time, which means that the assembly session is over now for the next time when government calls it again. So there will not be any assembly. But of course, when you will bring that no confidence motion, then there could be another special session for this, and that perhaps would come from the governor's side, because now session is not underway, so speaker may not have that role to play. Now it is up to the governor, but that is only when BJP approaches to the governor and governor thinks that which there is, Arun, under more all likeliness they will be doing so. And then the big question also arises is the status of these 15 suspended MLAs. How will that be considered? No, I guess these MLAs were suspended for this session only. So this session is over now, and so whenever there will be another session, special session for this purpose, there may be these people can actually go in the assembly. So this suspension All right, will Arun, not I'm going to reflect request on you to continue staying with me. I'm also joined in by senior political editor Pallavi Ghosh, who's joining us live. Pallavi, there needs to be a lot of light shed on the current scenario. Having heard what Jairam Thakur had to say, he's already alleged that the Congress government does not have the adequate majority. Having said that, is the BJP now in a position to prove so, with 15 of its own MLAs having been expelled? Well, I mean, see, if you call for a flow test, then you have to call a special session now if the BJP insists on that, and they will insist that, all the MLAs be allowed to attend it. But I think the Congress party is going to use this little bit of time that or reprieve they're going to get to try and reach out to each and every MLA. We already know, for example, the troubleshooters are there in Shimla, and the troubleshooters are going to have one-on-one conversation with all the MLAs of the Congress party and ask them for a solution, what the problem is. Not that the Congress Akanksha doesn't know what the problem is. Most of them have a complaint now, around 20 of them, apart from the 6 who cross-voted, that they're not happy with the working style of Sukhwinder Singh Sukhu. Sukhu himself has repeated press conferences right over here at the center. Jairam Ramesh also placatory noises. Priyanka Gandhi Vadra also in the midst of a crisis tweets. All of this just goes on to show that the Congress leadership is rattled. They also want to back, and they are backing Sukhu, but they're only hoping that the numbers don't start stacking up against him. The point is, Akanksha, will a change of guard actually salvage the situation for the Congress party? That's a possibility which is also now being looked at. And the BJP may not be happy with that. The BJP will keep on making the point that the MLAs are actually not with the Congress party. And therefore, let's have a flow test and make it very clear whether this government even deserves to be there in power for another day. Absolutely. In fact, I'm going to request you to continue staying with us, Pallavi.